So, what was it like seeing the POJK up close for the first time? In fact, हम जो वहाँ पर गए थे ना, point beep, and Major General Sir was with us and he was briefing. तो एक तो मैं दूर सारा कुछ सामने के जो mountains दिख रहे हैं, पीर पंजाल वगैरह सारा कुछ दिख रहा था, and they were telling us it is POJK and Major General Sir was also kind of explaining. तो हम लोग वहाँ खड़े होके कुछ गांव देखे, जैसे बालाकोट वगैरह देखे, जहाँ पर एनिमी जो है इन्फिल्ट्रेटर्स को ट्रेन करते हैं and then they send it into our country and do all the create all the havocs that they do. उस टाइम पे ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि वहीं से कूदूं और जाके एनिमी को पीट पाट के आओ and we get back what is ours. तो and I was also feeling so proud कि वहाँ से खड़े होके हमें सारे पोस्ट दिखाए जा रहे थे and how difficult, what kind of a difficult life that they are leading over there. मेरा एक अलग सा फीलिंग है. हाँ. So normally when I'm traveling the mountains, you go there, you enjoy the road, you enjoy the view, the weather, right? But when you look at the mountains, you don't think about the kind of perspective that these guys have when they're standing at the front, right? कि ये point है, this is the गली जहाँ से infiltration होती है. इस point पे enemy bunker है, उस point पे जो है across the other side वो एक मस्जिद है, वहाँ पे movement दिखाई देती है. इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, the very practical point of view from the Indian Army side, कि where they keep an eye on all these things. एक गली जो है, एक छोटा सा जो ridge है, it's when you see it, it's just that. But for the Indian Jawan standing on the bunker keeping an eye, that is a point where the enemy might enter. So he has to look at it from a different viewpoint. He has to keep an eye on it at all times. So एक अलग तरीके से देखा जाता है उसको. So शलभ, हम लोग बहुत सारे bunkers या forward bunkers में गए, है ना, forward bases में गए. Any particular base जो आपको बहुत ज़्यादा सही लगा और बहुत मज़ा आया देख के? So there was this lookout point at an elevation closest, and it was exciting because from that point the officer in charge showed us all the various areas. This is the enemy territory. This is where we encountered the last infiltration from this point which we had stopped, and then he offered to take us through this underground tunnel into another bunker. It was very exciting, you know, very filmy, so to speak. So उन्होंने एक tunnel बनाया so that they can move from one point to the other without being in sight of the enemy. आपको ध्यान है जब हम बिल्कुल ऊपर टेरेस पे खड़े हुए थे, that entire area was cordoned off by bulletproof glass. हाँ, yes. है ना, जहाँ से हम सामने एनिमी पोस्ट देख रहे थे, और वो कह रहे आज आप बुलेटप्रूफ ग्लास से हट के खड़े हो सकते हो, कोई गोली नहीं मारेगा आपको, because it is ceasefire. तो had it been a normal scenario, पक्का अब तक गोली लग जाती. तो वहाँ पर खड़े होके चौड़े में खड़े हैं, and वहाँ पर बोले थे भाई smile, you have been clicked, you have been watched. Smile, you have been watched. Most probably they're taking your photos, and they will be wondering ये लोग कर क्या रहे हैं. So Shalabh, this was not your first ride, but then I know every ride is your first ride. तो इस राइड के लिए knowing कि इतना difficult ride होने वाला है because of the conditions that we were going to ride, आपने कोई खास preparation या ऐसा कुछ किया था? Not really, in the sense कि it was hot weather. We knew that, right? So the one difference from our last ride is we didn't have to carry a whole lot of warm clothes. So that way we were traveling light. But on the other hand, something that I've never done before is carry, you know, a set of decent, smart, casual clothes on the ride. Because normally when you're on the ride, we're either in a biking gear. In the evening, we're in t-shirts and shorts and jeans. यहाँ पे तो हमें specially बोला गया था कि शाम को wherever you reach, there's going to be a dinner at the officer's mess, and you have to be dressed in proper clothes for that. Clean, pressed shirt and jeans and shoes. और मतलब एक अलग ही एक feel आया when we walked into the mess and the kind of hospitality that we had. In fact, wherever we went across the entire this 1400-1300 kilometers of ride, चाहे हम base में जाएं, किसी forward unit पे जाएं या कहीं पर भी जाएं, the kind of hospitality, the kind of warmth that we received from the army people, वो कोई भी हो. Whether it was, I mean, from the senior most officers, we met Major General and we shared lunch with him. From there down to
the JCOs and the Jawans, we spent time with all of them, and at every place they were so hospitable. I mean, their arrangements were perfect, despite it being forward area. खाना पीना अच्छे से। अरे क्या खाना खाया, बिल्कुल बेसिक वाला खाना, ये नहीं कि बिल्कुल मुर्ग मुसल्लम आया और बेसिक खाना कुछ नहीं। You could really relish it. Absolutely. Right? Obviously, you'll working hard all day long. I think we need to mention one thing over here. All across, because it was summers और इतना गर्मी के अंदर हम लोग राइड कर रहे थे, so it was important to hydrate. Okay, wherever we went, forward post हो, बेस हो या किसी किसी टीले के ऊपर हम पहुंच जाते हैं, वहां पर हर जगह हमें नींबू पानी पिलाया जा रहा था। द नींबू पानी टेस्टेड exactly the same all across. Everywhere they were making it. And I don't know where the training happens, but wherever the training happens of the chefs and the cooks, they were like amazingly trained. By the way, one of the things that we did while we were riding was, this is something that Shalab had been, insisting कि हम ये करें, just keep drinking water or fluid. क्योंकि इतनी गर्मी थी वहाँ पर और उस गर्मी में राइड करना was very difficult. भयंकर गर्मी, मतलब ideally that region, this was probably the wrong time of the year to be riding. It gets very warm in the afternoons, in the mornings and evenings it's still pleasant. So I think उस trip में at least I was consuming almost 5 liters of water every day. हाँ, मेरे में भी है बहुत सारे, मैं भी रुक करूँगा, अभी करता हूँ, पहले थोड़ा अपना देखभाल कर लूँ। भाई बर्फ़ मत डालना, बगैर बर्फ़ बनाना, ठीक है? बर्फ़ नहीं डालना है। और मैं तो कई बार नहा भी लिया, मतलब सीधा नलके के नीचे सर दे दिया मैंने और पूरा पानी पूरा गीला कर लिया, तो फिर पोंछा भी नहीं, बिकॉज दैट वाटर मतलब जो सर गीला हो रहा था 2-3 मिनट के अंदर वैसे ही सूख जा रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी था। That's the only way to beat this heat. It's so hot. The only thing that is, that is making us go is the excitement, the enthusiasm which is there with this entire group. It's crazy. तो साला गर्मी हो या कुछ भी हो, हम ना रुकने वाले। So at the end of the day, we would be dead tired. We would land up at wherever we had to put up for the night, unpack, get rid of all the dirt and dust, then wash and then get ready for dinner. I especially remember our arrangements. So I am not going to forget that image. So army barracks में ऐसे सजाया होता जैसे कि it's a party area. हाँ. Actually नहीं करता कि कोई शादी होने वाली है। Exactly, इतने remote area में आर्मी बैरक्स बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन बना के सामने वाले ग्राउंड में जो छोटे से टेंट्स लगा दिए, सीटिंग लगा दी, छोटे लाइट्स लगा दिए, जो कामोफ्लाज टेंट का उन्होंने एक वो पैसेज सा बनाया था, पैसेज बना दिया हमारे लिए, और एक छोटा सा शामियाना बनाया था विद पैराशूट। तो दिल से का जो मतलब होता है ना, अभी तक एटलीस्ट मैंने पढ़ा था, सुना था, इस बार एक्चुअली उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है कि कोई दिल से जब कोई काम करता है तो क्या होता है, एंड दैट्स व्हाट आवर इंडियन आर्मी इज ऑल अबाउट। एवरीथिंग इज दिल से। By the way, Shalab and I both were riding Interceptor. So the kind of roads that we traveled on, and how do you think our bike performed? Perfect. That's just one word for it. Perfect. I mean, that bike can go anywhere. Seriously.
है ना, कहीं भी जा सकते। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई बाइक खरीदना है, टूरिंग करना है, भाई इंटरसेप्टर उठा लो, थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफिकेशन कर लो अपने हिसाब से। लाइक आई ऑलवेज से दिस इज अ बाइक व्हिच कैन एक्चुअली यू कैन मोल्ड इट अराउंड यू एंड मॉडिफिकेशन क्या क्या करना चाहिए ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। आई हैव स्पोकन अ बिट अबाउट द मॉडिफिकेशन दैट यू कैन डू व्हिच आर लाइक वेयर नेसेसरी काइंड ऑफ थिंग, बट ये बाइक लेके कहीं भी जा सकते हैं। और ये बात कहने के लिए हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। बताओ यार हाँ, कितने सारे हमने बाइक टायर, हमने रैल्को टायर पता नहीं कितने सारे बेच दिए, आज तक कोई पैसे नहीं मिले इस चीज के। आई होप यू रैल्को गाइस एंड रॉयल एनफील्ड गाइस यू आर लिसनिंग, प्लीज कुछ कर लेना हमारे लिए भी। हिमालयन में हिमालयन कैसा रहा? ओके, नो ऑफेंस टू एनीबडी, टू ऑल हिमालयन राइडर्स, नो ऑफेंस। हम लोग जनरल टांग खींच रहे हैं दूसरी की, बट एट द सेम टाइम दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू रियलाइज कि जब आप बाइक ठीक से मेंटेन ना करें तो क्या होता है। हाँ, it's not about the Himalayan, it's about the maintenance. Yeah. Different bikers treat the bikes differently is what I have seen. Yeah. Right? Some people get into it without really thinking it through. So there was every day one Himalayan would break down. And the widest variety of problems थी। किसी का क्लच केबल टूट गया, किसी का चैसी टूट गया। हाँ, चैसी टूट गया। तो डिफरेंट बाइक बट किसी का चैसी टूट गया। किसी का क्लच प्लेट में प्रॉब्लम आई थी, ओवरहीटिंग हो गया, but they were all maintenance issues. Those bikes were not properly maintained for this kind of ride. Whenever you go for a ride, छोटा हो या बड़ा हो, it is important that you get your bike maintained, checked thoroughly before you actually roll out. जैसा हमारे साथ हुआ, हर रोज 1.5 से 2 घंटे बर्बाद हुए। वो अलग बात है, हम लोगों ने खूब मस्ती भी मारी वहाँ पर and people actually fooled around. But the sad part is we lost at least 1.5 hours कई जगह 2 घंटे हमारे बर्बाद हुए। Since we're talking about it, it is also important that थोड़ा बहुत बाइक का काम आपको आना चाहिए। मतलब जहाँ पर हम लोग राइड करते थे, there was no way that you could have got a mechanic. So knowing a bit of, not that you can know everything, but थोड़ा बहुत काम। But इस पॉइंट पे एक चीज बताने पड़े, एक ग्रुप जिसके साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, they were such amazing dudes with the bike. बाइक बढ़िया चलाते भी थे और बाइक को ठीक करना भी बड़ा अच्छा था। हाँ, मतलब उनसे तो मैंने बहुत सीखा इस बार। सीरियसली वही होता है व्हेन यू ग्रुप के साथ राइड करें, और स्पेशली एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ राइड करते हैं, नॉट ओनली यू लर्न हाउ टू बिहेव इन अ ग्रुप बट हाउ टू बी अ ग्रुप, हाउ टू राइड एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट cruising gods. So thank you cruising gods, we are actually thankful to you because we learned, both of us learned quite a lot from you guys. So I think आज के लिए बस इतना ही। There's lots more to come in the next episode. There's so much to talk about and keep watching. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन टू द बेल आइकन, ताकि जब हम अपना नेक्स्ट वाला इसका पार्ट रिलीज करें यू आर नोटिफाइड। So we will meet you on the other side with our next episode. Till then, do take care. Bye.